Hello everyone, welcome back to another video from Kotak Securities. The weekend is here, means it's time for our weekly currency insights. So without any further ado, let's get started. So सबसे पहले हम लोग एक बार नजर डालते हैं कि ओवर द पास्ट वीक करेंसीज ने कैसे परफॉर्म किया है. सो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कि JPY INR जो था दैट वाज द हाईएस्ट परफॉर्मर, which was followed by GBP INR, Euro INR, and the dollar rupee pair actually kind of underperformed. So why the JPY INR pair was outperforming, we'll look at it in the slides to come. So for starters, let us first understand what happened in the last week. So अगर आप मार्केट ट्रैक कर रहे थे क्लोजली तो आपको पता होगा कि मार्केट का जो सेंटिमेंट था इट वाज कंटिन्यूअसली स्विचिंग बिटवीन रिस्क ऑन रिस्क ऑफ रिस्क ऑन रिस्क ऑफ. As we entered the week, we had a risk off mode where there were protests in China, which, as a matter of fact, are a very rare event. So, जिसकी वजह से एक uncertainty create हुई and we saw the dollar index actually move higher because of a risk off mood. But as we went into the week, we had the Fed chair Jerome Powell come out and talk before the December policy. So the मेजर एक्सपेक्टेशन वाज कि उनकी तरफ से गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन थी कि आने वाले फेड मीट में पॉलिसी के जो टाइटनिंग पेस है उसका क्या होगा. आई मीन पीपल वर लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस ऑन दैट फ्रंट एंड ही डिड नॉट disappoint the market. और उन्होंने कहा कि looking at the data we can actually roll back the tightening pace, and starting this December onwards the market actually loved the tone and immediately there was a risk on mood. Dollar index or US 10-year bond yields came down tanking and बाकी जो करेंसीज थे उन्होंने इसमें से बेनिफिट कर लिया. नाउ ऑलरेडी देयर वाज अ रिस्क ऑन मूड. वहीं पर जो यूएस का जो बाकी डेटा था, द पीसीई, द पीएमआई, ऑल ऑफ देम आल्सो अगेन वर, पीसीई वाज एक्चुअली इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन. पीएमआई ने क्लियर कट बोल दिया कि जो इंडस्ट्रियल डेटा है दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ श्रिंकिंग. सो द मार्केट टुक दिस डेटा एज इफ द rate hikes over the past couple of months have actually finally started kicking in. एंड उसका जो रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट था जो फेड देखना चाहता था कहीं ना कहीं वो अभी आ रहा है अंदर. सो ऑल इन ऑल इट वाज बैड वीक फॉर द डॉलर. बट वहीं पर बाकी करेंसीज जो थे उन्होंने काफी एप्रिसिएशन दिखाया. आई मीन मोस्ट ऑफ देम एप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर. एंड मेजरली अगर मैं बात करूँ तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ रिस्क ऑन मूड फॉर द वीक. सो कमिंग ऑन टू व्हाट हैज हैपेंड नाउ, अगर आप टेक्निकली देखें तो डॉलर रुपी पेयर में 82 के पास हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दिया था. एंड वहीं पर अगर आप देखो तो ऑन द डाउन साइड समवेयर अराउंड 81 टू 80 दैट इज द सपोर्ट जोन दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ. एंड इन दिस वीक, इन द पास्ट वीक, इट मैनेज टू प्रोटेक्ट दैट लो. सो अभी एज लॉन्ग एज इट इज अबाउट दैट 81 और थोड़ा अगर हम लोग उसको लीवे दे टू 80 मार्क, we might see the dollar rupee pair actually move in a range between the 81 and 82. Again, slight 10 15 paisa here and there is a leeway that I am willing to give. Now coming on to the other currency pairs, जैसे मैंने आपको बोला कि डॉलर थोड़ा सॉफ्टन हुआ, थोड़ा नहीं काफी सॉफ्टन हुआ एंड बाकी करेंसीज ने इसमें से बेनिफिट कर लिया. सो यूरो वाज वन ऑफ दैट. एंड यूरो यूएसडी का अगर आप चार्ट देखोगे तो द अप मूव हैज बीन सिग्निफिकेंट. एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमें थोड़ा एक रिजेम्बलेंस आते हुए दिखाई दिया था. सो ये जो रिसेंट अपमूव है इन मोस्ट ऑफ द करेंसीज दैट हैज एक्चुअली काइंड ऑफ इम्प्रूव द चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल. सो अगर अभी हम लोग देखें तो बायस इज मोर ऑन द अपसाइड देन ऑन द डाउन साइड और ऑन द कंसोलिडेशन फेज. बट कहीं ना कहीं एक बायस जो है वो ऑन द अपसाइड है. नाउ वन मेजर थिंग टू रिमेंबर हियर इज ड्यूरिंग द वीक हम लोगों ने देखा कि यूरोजोन का सीपीआई इन डेटा भी आया था. एंड अभी एक मेजर एक्सपेक्टेशन आने वाले मीटिंग में होगा फ्रॉम द यूरोपियन सेंट्रल बैंक. अभी वहाँ उन लोग का विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट्स क्या मूव होने वाला है. एंड लुकिंग एट द स्पीचेस या द सिचुएशन राइट नाउ, कहीं ना कहीं एक डिवाइड है बिटवीन द मेंबर्स. एंड एक क्लियर कट डिसीजन हमें ये पॉइंट पर दिखाई नहीं दे रहा है कि वेदर दे आर गोइंग टू गो फॉर सुपर हॉकिश और स्लाइटली हॉकिश और आर गोइंग टू रिड्यूस द पेस. ऐसे कुछ भी हमें हिंट अभी एट द मोमेंट आ नहीं रहा है. Now coming on to the pound, the GBP INR pair. So GBP INR is a pair that reacts to the market sentiment very fast. Risk on रहेगा, GBP INR is the one to benefit. And वही हमें होते हुए दिखाई भी दिया था over the week. काफी अप मूव हमें जीबीपी में दिखाई दी थी. एंड कमिंग ऑन टू द GBP INR pair, it has actually managed to move close to the 100 mark.
नाउ अगर आप चार्ट पर देख सकते हो तो ये जो 100 लेवल था दैट वाज आई थिंक ब्रोकन समवेयर इन अप्रैल और मिड मिड अप्रैल या अर्ली मई, हम लोग बोल सकते हैं अर्ली मई तो नहीं होगा, मिड अप्रैल होगा। वही लेवल पर द पेयर हैज कम बैक। नाउ चार्ट स्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली इसमें भी इंप्रूव हुआ है। इन द सेशंस टू कम वी विल सी इट मूव हायर। नाउ कमिंग ऑन टू द जेपीवाई आईएनआर पेयर व्हिच हैज बीन significantly which has significantly outperformed. नाउ अब ये क्यों हुआ? सो आपको पता होगा कि जेपीवाई जो है या येन है, जो जापानीज येन है, it reacts more to the price action in the US 10-year bond yields. Now, after Jerome Powell said that we could actually, reduce the pace and बाकी जो downbeat data आया US से, that put a lot of pressure on the dollar and the US 10-year bond yields. Now, that actually happened to be a blessing in disguise for the USD JPY pair. And USD JPY pair जो around 137 hold कर रहा था, it started tanking towards fresh 4-month lows. And उसी का इफेक्ट हमें JPY INR में भी दिखाई दिया था। एंड अगेन ये जो उसने लेवल ब्रीच किया था अराउंड जून जुलाई, जो 61 का जो लेवल था, वहीं पर इट हैज एक्चुअली मूव्ड बैक। सो चार्ट स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट ये पेयर में भी हमें दिखाई दे रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट विल बी द इवेंट्स दैट विल बी ड्राइविंग द करेंसी पेयर्स इन द कमिंग वीक। सो फर्स्ट ऑफ इंडिया की तरफ से वी हैव द आरबीआई पॉलिसी, देन वी हैव द इन्फ्लेशन रेट एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। Now, from the US, we have the service PMI and the PPI data. Now, these are the data points that will spike up the volatility in the coming week. Now, coming on to the biases and the range that we can expect. Coming on to डॉलर रुपी, जैसे मैंने आपको बोला कि 80 से लेके 82 का इसमें हमें ब्रॉड रेंज दिखाई दे रहा है। And as long as the supports are held, we would see the pair actually have a range bound move between the broader range, that is the 80, 82, 82. Coming on to Euro INR, yeah, for that matter, all the remaining three currencies, Euro INR, GBP INR, JPY INR, इसमें bias जो है वो bullish हो चुका है. We are able to see a slight tilt on the upside. Now, slight नहीं बोलूंगा मैं, काफी improvement है in the chart structure. Bullish signs इसमें actually ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं on the charts. So for starting off with Euro INR, 85.20 on the downside, 86.20 on the upside is what we expect in the coming week. Now coming on to GBP INR, 99.30 and 100.30. Now bear in mind, ये जो 100 का लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा। नाउ टेक्निकल्स में दिस टेक्निकल एनालिसिस में दिस साइकोलॉजिकल लेवल प्लेज अ वेरी की रोल। सो ये जो 100 से 100.30 का जो जोन है ये थोड़ा क्रूशियल रहेगा एंड द प्राइस एक्शन अराउंड दिस विल बी वेरी क्रूशियल टू वॉच फॉर। नाउ कमिंग ऑन टू द JPY INR पेयर, अगेन इसका जो 60 का लेवल था दैट वाज काइंड ऑफ like a psychological level, but वो breach कर चुका है फ्राइडे को and it was heading higher. Now coming on to the range for the next week, 60-50 जो है इसमें 60-50 60-40 जो है ये हमें आने वाले वीक में सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा। And on the upside, 61-40 61-50 is where we could find resistances coming. And जो bias है इसका that will continue to be on the bullish side. Now, that's all for our currency insights this week. Now, if you want to be updated, do subscribe to our YouTube channel. And also, do not forget to follow our Telegram channel, that is Currency Corner by Kotak Securities. Here, we'll keep updating, we'll keep posting any new happenings or any interesting analysis that we find on the charts. So, that's all for the video today. Thank you for tuning in. See you all next week. Till then, stay safe, trade safe. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.